Hello friends, good morning, good afternoon and good evening. So we'll be continuing the discussion session of the OCS previous year questions. We have already discussed the ecology and environment portion of OCS 2000. Ecology portion we have already completed. Ecology 2006 ରୁ 2020 ecology environment complete discussion we have taken, and you can watch those in Synapse Academy YouTube channel. These discussions are a must before the preliminary examination. निहाती देखी की जीवो discussion prelim पूर्वरु ठीक अछि. So in this session we will be continuing with our discussion of science and technology portion. You can say general science portion. General science 2006 to 2019 we have already taken. That is also available in Synapse Academy YouTube channel, and this is the previous year questions of 2020 general science. Okay, and with this we will be completing two subjects: ecology complete discussion and general science complete discussion from 2006 to 2020. Okay, so without wasting time, let us begin. So this is discussed by me, and this is brought to you by Synapse IS. So there are various courses available for OCS examination by Synapse Academy. You can have preliminary test and discussion series, main test and test evaluation and discussion series, which includes GS plus essay, and you can have interview guidance program. Okay, and to avail these programs you can contact us in this number, WhatsApp number, and also you can send a mail to us. We will be getting back to you. Okay, so we will be beginning the discussions. Question number 1. Question number 1 says that bats use which of the following techniques, okay, to navigate and find food? Okay, this is very good question. Option 1 resonance, option 2 magnetoreception, option C electroreception, option 4 echolocation. Okay, see, resonance is a phenomenon you might have studied in physics re padithibwa resonance, ठीक अछि. So magnetoreception, electroreception, there are no such things applicable here. Answer will be echolocation. Okay, we will see what is echolocation. See, what is echolocation? Echolocation is the use of reflected sound. Okay, echolocation use of reflected sound waves to find objects. Okay, animals like dolphin, bats and birds use echolocation to hunt for food and objects. For food pai, and for food and to search for any objects, dolphin, bats and birds use echolocation. Okay, and echolocation से केमती हेल्पफुल हुए से माने जदि एटी गोटे बर्ड अच्छी कि डॉल्फिन अच्छी से माने बहुत दूर रे कौन ऑब्जेक्ट अच्छी कि किसी फूड मटेरियल अच्छी से माने जानि पारंते. केमती जानंती? सी दिस इज ए बैट. ओके, बैट गोटे वेब छाडला. ओके, एटी गोटे तार प्रे अच्छी, ठीक अच्छी. दिस इज प्रे, दिस इज प्रेडेटर. तार प्रे अच्छी, से गोटे वेब छाडला, येलो वेब छाडला. से येलो वेब टा एटी बाजी के रिफ्लेक्शन हैला, से रिटर्निंग वेब टाକୁ से कैच कला, ठीक अछि. That is called as echolocation. The bat, the dolphin, the whale, okay, these three organisms use echolocation. This is a whale, this is a dolphin, and this is a bat. Okay, food material pai kimba any object location pai. देखो एटे whale वेब छाडुची. This is the seashore. Okay, seashore से जानि परछि, this is seashore. Okay, जानि परले कि आउ आगु जिबार नै. So that is the application of echolocation. So answer here will be echolocation. Okay. Next question. The nucleic acid present in coronavirus is, coronavirus रे को nucleic acid अच्छी, whether it is DNA, oxyribonucleic acid, ribonucleic acid, chromatin. कौन होगा आंसर? Okay, very common question because COVID-19 pandemic outbreak पे ये question आछि. Okay, so the nuclear material in coronavirus is RNA, that is ribonucleic acid. Okay, see, this is the structure of the coronavirus. This is the RNA.
you can see this is the RNA. Okay, you have to remember that this the nucleic acid present in coronavirus is RNA. So these are other things on the surface of the COVID-19 virus: nucleic acid, spike glycoprotein, envelope. Okay, you don't need to remember them. Next question: television signals are frequency modulated, amplitude modulated, both phase modulated. Okay, the answer will be both frequency and amplitude modulated. Let us see this. See, TV signal le tame dekhucho, there is a video signal and there is a audio signal. Okay, the video signal is amplitude modulated and the audio signal is frequency modulated. So the television signals are both amplitude modulated and frequency modulated. Okay, we'll move to next question. Electrical energy is converted to mechanical energy in dynamo, microphone, electric motor, heater. We will see each option. Dynamo re kon hochi? Dynamo re mechanical energy is converted into electrical energy. ठीक अछि, मन रख. माइक्रोफोन कौन होची? आमे माइक्रोफोन मु एबे क्लास नउची माइक्रोफोन रे जो साउंड प्रोडक्शन होची, the sound energy is converted into electrical energy. ठीक अछि. Then इलेक्ट्रिक मोटर रे कौन होची? इलेक्ट्रिक मोटर रे इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मेकानिकल एनर्जी. ठीक अछि, जोटा हमर क्वेश्चन. सो आंसर हबो सी. In electric motor, the electrical energy is converted into mechanical energy. What happens in heater? Heater re kon hochi? The electric energy is converted into heat. Okay, so remember these things. Questions ever saita podichi. Next year आउ किछि भी question आसी पारे. ठीक अछि. Okay, we will move to the next question. One light year is, okay, one light year is distance traveled by light in free space in 1 year, light emitted by sun in 1 year, time taken by light to travel from sun to earth, intensity of light emitted by sun in 1 year. No, light year, you have to remember that light year is the unit of distance. Light year is the unit of distance. So एबे तुम जानी परिवो जे light year is the distance traveled by light in free space in 1 year. Okay, so this is the light year. Okay, so there is some fact for you that you have to remember that speed of light in space is 3 into 10 to the power 8 meter per second. In 1 year, the light travels a distance of 9.46 trillion kilometer per year. So much distance. Okay, that is the light year. So remember that light year is the unit of distance, and option A will be the correct answer. Okay, so next question. This is a very good question, conceptual question. Bleeding from nose is caused when a person is there at nose bleeding. केतेबेले हुए केतेबेले nose bleeding हुए. आमे option A रे कोन देछि? Higher altitudes where atmospheric pressure is low. Altitude माने height. ठीक अछि. Higher altitude जेतबेले आमे अधिक ऊपर को जाउछे atmospheric pressure कमी जाउछे. Option A देछि सेटा. Lower altitude where atmospheric pressure is high. Normal altitude where atmospheric pressure is high. No effect on altitude. Okay, so what will be the answer? See, we have to understand the concept behind this. Okay, jodi suppose this is sea level. Okay, this is the mountain. Okay, jane चढ़ी गला माउंटेन ऊपर को. ठीक अछि. लद्दाख, सपोज तुम लद्दाख को गला. आमे जानि छे कि एतले आमे ऊपर को जाउछे हाइट एलिवेशन माने अल्टीट्यूड को जाउछे. From sea level the pressure decreases माने प्रेशर कमे. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमे. ठीक अछि. सपोज this is me. Okay, this is me and I am happily climbing the mountain. मो माउंटेन को चढ़ी गले. ठीक अछि. मो बॉडी रे किछि ब्लड वेसल अछि जोथरे कि ब्लड फ्लो होछि. ठीक अछि, ब्लड फ्लो होछि. तो जेतबे प्रेशर एठी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहा अछि एठी कमी गला. सेते बेले कोन हला, मो बॉडी रे भीतरे ब्लड रो जो प्रेशर अछि
सी लेवल कौन अच्छी आटमोस्फेरिक प्रेशर आउ ब्लड प्रेशर आटमोस्फेरिक प्रेशर अधिका अच्छी ब्लड प्रेशर कम अच्छी से ब्लड भेसेल भितर ब्लडटा कंप्रेस होगी अच्छी किंतु जो उपरको पलैली से कौन है मोर आटमोस्फेरिक प्रेशरटा कमिगला ब्लड भितर जो प्रेशर अच्छी ब्लड भेसेल भितर जो प्रेशर अच्छे बढ़ीगला ताफल कौन हुए ब्लड भेसेल रु ब्लड बाहर को पलि आसे ठीक अच्छे या चापिक रखी ना ये बाहरी पलि आसला बेले दैट इज मैनिफेस्टेड दैट इज सीन एज नोज ब्लीडिंग नोज रे सेति में ब्लीडिंग हुए ठीक अच्छे तो कॉन्सेप्ट कौन अच्छी कि मैं गोटे अल्टीट्यूड को जाऊे कि गोटे एलिवेशन को जाऊे आम जो माउंटेन को ट्रावेल करुचे से आटमोस्फियर प्रेशर कमी जाए आमर ब्लड भेसेल भितर प्रेशर बढ़ी जाए से नोज ब्लीडिंग हुए ठीक अच्छे ओके तो ये यू कैन इजिली टेल द आंसर आंसर विल बी हायर अल्टीट्यूड्स व्हेयर atmospheric pressure is low and the blood pressure becomes more comparison to atmospheric pressure एमती ना कि बीपी बढ़ी जाए comparison to atmospheric pressure blood pressure टा अधिक जाए ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन the main component of biogas simple question okay biogas रो main component is methane methane ठीक अच्छे आउ केतरा जिंस methane CH4 main component of biogas is methane otherwise called as gobar gas okay ठीक अच्छे so what is the use of ethylene okay ethylene option अच्छी option B answer will be C okay आमे एक्स्ट्रा पॉइंट की जानिबा इथाइलिन विषय रे दिस इज द आंसर इज सी सो इथाइलिन विषय रे एक्स्ट्रा पॉइंट आमे जानिबा कि इथाइलिन की यूज करा जाय एंटी फ्रीज फॉर एयरप्लेन इंजन ओके जेतेबेले माने सपोज गोटे एमती जगह रे एयरप्लेन ट्रैवल करूची जोटी की टेम्परेचर बहुत कम अछि सेतेबेले तार इंजन जेमती की तार फ्यूलटा फ्रीज न होई जिवो ठीक अच्छे से गोटे आंटी फ्रीज एजेंट यूज करा जाए से आंटी फ्रीज एजेंटा इथाइलिन रू प्रोड्यूस हुए तार ना होची इथाइलिन ग्लाइकल एटा क्वेश्चन आसे यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट इथाइलिन ग्लाइकल इज यूज एज आंटी फ्रीज एजेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पड़थिबो ठीक अच्छे अदर आ गोटे इथाइलिन अच्छी साइंस रे पढ़िथिबो हार्मोन इथाइलिन टा होची गोटे हार्मोन इट इज ए फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन फ्रूट फल को पाचिया आम इथाइलिन हार्मोन यूज करूँ ठीक अच्छे फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन नॉर्मली भी प्लांट रे इथाइलिन इज यूज्ड एज फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन ठीक अच्छे सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सो दीटा यूज गोटे इथाइलिन ग्लाइकल यूज एज एंटी फ्रीज एजेंट एंड इथाइलिन इज द फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन simple question what are the subatomic particles electrons protons neutrons all of the above simple question समस्त जानी छो subatomic particles are all of the above okay all are subatomic particles you know electrons you know protons you know neutrons आउ दिटा में एक्स्ट्रा जिंस डिस्कस करिवा what are neutrino and what is neutrino and what is positron neutrino कोन positron कोन ठीक अछि remember that neutrino is similar to electron but it has no charge electron no negative charge you know but neutrino is similar to electron but it has no charge remember this hela question asibo what is positron positron is anti electron neutrino re charge 0 but positron re charge plus electron re charge minus ठीक अछि positron is anti electron charge is plus 1 but mass is same as electron है electron mass जहाँ positron mass सेया but charge होची positive electron charge होची negative okay okay ठीक है next question carbon very good question carbon monoxide is a poisonous gas because it option A binds to digestive hormones damage lungs destroy RBC binds to hemoglobin anybody yes binds to hemoglobin carbon monoxide is a very poisonous gas काहे के poisonous because तार किछि कलर नाही ऑर्डर नाही किछि नाही स्मेल भी हबन ठीक अछि सी ए गोटे भलो जिंस एक्सप्लेन करबा सी हमरो एटा होची आरबीसी दिस इज आरबीसी रेड ब्लड सेल ठीक अछि रेड ब्लड सेल ले अछि हीमोग्लोबिन जोटा कि जो थरे आयरन अछि आउ सेटा ऑक्सीजन कैरी करे नॉर्मली इट कैरीज ऑक्सीजन कैरी करे किंतु तमे मन कर गोटे घरे शोइच कबाट बंद करी जो घरे कोयला जळुछ
ठीक अच्छे कोयला रू बाहर कार्बन मोनोक्साइड गैस आसिकी हेमोग्लोबिन बाइंड कला हिमोग्लोबिन बाइंड कला परे सी एते स्टेबल है कि हिमोग्लोबिन लागिवो जे सी आउ हिमोग्लोबिन को छाड़िबो नाही ठीक अच्छे हिमोग्लोबिन को जो न छाड़िला ताहले हिमोग्लोबिन नॉर्मल काम कौन हिमोग्लोबिन नॉर्मल काम होची ऑक्सीजन कैरी करे हैला से कौन करे तमर मन करे एटा लंग्स ठीक अच्छे तमर एटा लंग्स दी बड़ लंग्स अच्छी आउ एटा होची तमर टिश्यू एट सब टिश्यू अछंती नॉर्मली हिमोग्लोबिन कौन करे लंग्स रे ऑक्सीजन को बांधी की रखे ब्लड वेसल बाटे निए टिश्यू रे छाड़ी दिए एटी ऑक्सीजन छाड़ देकी हिमोग्लोबिन पुणी निजे पळे आसे ठीक अच्छे गला आड़ को ऑक्सीजन को सांगे नहीं जाए किंतु आसला आड़ को हिमोग्लोबिन निजे पळे आसे ऑक्सीजन को छाड़ देकी तेणु तमे ऑक्सीजन नेल एटा हला किंतु तमे जदि भूल रे कार्बन मोनोक्साइड नहीं गल ताले कोन हबो एटी हिमोग्लोबिन अछि हिमोग्लोबिन सागरे कार्बन मोनोक्साइड लागी गला हिमोग्लोबिन जानी एटा कार्बन मोनोक्साइड की ऑक्सीजन सी ताकू धरदेला परे कार्बन मोनोक्साइड आ हिमोग्लोबिन को छाड़िबो नाही ठीक अछि हिमोग्लोबिन ता धरि चलला कार्बन मोनोक्साइड टिश्यू पाखु गला किंतु एठी जेतल ताकू कहबो तू छाड़ बाबा मते सेठी आ कार्बन मोनोक्साइड कहबो मु तते आ छाड़ीबी नाही ठीक अछि हिमोग्लोबिन को से बांधिक रखीदेला हिमोग्लोबिन आउ फ्री हो पारला नहीं आउ एठिकी आसी पारला नहीं जेते हिमोग्लोबिन छाड़े गला एठिकी आउ किछि आसी पारले नहीं ठीक अछि तेणु सब हिमोग्लोबिन कंज्यूम हो गले बॉडी रे आउ ऑक्सीजन कैरी करिया पे हिमोग्लोबिन नाही ठीक अछि दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग ठीक अछि से आउ हिमोग्लोबिन को टाइटली एते बाइंड करियो हिमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरी करिया पे छाड़ीबन ठीक अछि सो ऑप्शन इज कार्बन मोनोक्साइड इज ए पॉइजनस गैस बिकॉज इट बाइंड्स टू हिमोग्लोबिन ठीक अछि ओके बेले बेले एटा भी क्वेश्चन आसी पारे जे कोन फॉर्मेशन करे गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन करे कार्बन मोनोक्साइड हिमोग्लोबिन बाइंड करे सेटा कोन कहवा जाय व्हाट इज दैट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट ए सिंथेटिक पॉलीमर ता माने पचार छी व्हिच इज ए नेचुरल पॉलीमर सिंपल ओके नॉट ए सिंथेटिक माने कोन नेचुरल पॉलीमर ओके पीवीसी is a synthetic polymer nylon is a synthetic polymer okay polystyrene also is a synthetic polymer but resin होची गोटे natural product plant product that is the natural polymer okay okay so answer will be resin okay resin is the natural polymer it is not a synthetic polymer okay see this is a table the differentiating names of natural and synthetic polymers see natural polymer किए आम बॉडी रे प्रोटीन अछि protein is also a polymer protein is a polymer of what anybody protein is a polymer of amino acids okay protein is a polymer of amino acids प्रति प्रोटीन रो कंपोनेंट होछि amino acid ठीक अछि प्रोटीन कोठी अछि हेयर रे अछि स्किन रे अछि टिश्यू रे अछि आउ गोटे पॉलीमर होची पॉलीसैकेराइड इज ए पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज स्टार्च एटा सब पॉलीसैकेराइड ठीक अछि पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए दीज आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड सो दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स आमे एबे पढ़ले रेजिन इज आल्सो नेचुरल पॉलीमर ठीक अछि ओके सिंथेटिक पॉलीमर किए नाइलॉन्स ऑप्शन नै अछि पॉलीस्टर्स एक्राइलिक पॉलीविनाइल पीवीसी कौन पई यूज हुए प्लास्टिक सीटिंग पे यूज हुए प्लम्बिंग मटेरियल पे यूज हुए पाइप सीट मटेरियल पे ठीक अच्छे प्लास्टिक सीट polystyrene used for insulating materials so hope it is clear that what are synthetic polymers and what are natural polymers okay okay next question bee sting causes severe pain and burning sensation due to presence of bee sting रे कौन अच्छी जेमती कि मारिले महुमाछी मारिले बहुत बिंधा हुए ठीक अच्छे what is that is methanoic acid okay methanoic acid option is methanoic acid अच्छा मते कह एसिटिक एसिड कोठी अछि विनेगर ठीक अछि साइट्रिक एसिड कोठी अछि जाने छ समझते साइट्रस फ्रूट्स ओके methanoic acid otherwise it is called as formic acid okay okay so sulfuric acid you also know
गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एसिटिक एसिड विनेगार रे अछि साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स and methanoic acid in bee sting that causes severe pain and burning sensation. Okay, okay, ठीक अछि. Next question. Albinism is caused due to deficiency of albinism. कौन albinism is a, you can say it is a genetic disease. Okay, genetic disease. Okay, केमती हुए देखो. See, albinism रे कौन हुए normally a person will be having less or no production of melanin. Melanin कौन melanin is a pigment. melanin हो गोटे pigment जोटा कि आम स्किन रे अच्छी हेयर रे अच्छी ठीक अच्छे melanin स्किन और हेयर रे अच्छी जदि melanin प्रोडक्शन हबनी ताहले एटा जो पिगमेंट अच्छी स्किन हेयर रे एटा ब्लैक कलर दिए स्किन को पिगमेंट को जदि melanin प्रोडक्शन हबनी ताहले इट विल बी व्हाइट स्किन विल बी व्हाइट हेयर विल बी व्हाइट so that is the albinism that is called as albinism. Okay, and what is the enzyme that is present that is deficient in albinism? The enzyme is known as tyrosinase. You can remember, if you can remember this is good. Okay, because question padichi tyrosinase is the enzyme. Tyrosinase is the enzyme in albinism. Okay, okay, so albinism is a defect, is a enzyme defect. Okay, albinism is a enzyme defect. This which enzyme? This is tyrosinase. So यदि मन रखिया अछि कोन albinism enzyme defect enzyme ना कोन tyrosinase. Tyrosinase रा काम होची मेलानिन प्रोडक्शन. tyrosinase नाही मेलानिन प्रोडक्शन हबनी ब्लैक स्किन नथिबो रहिबोनी व्हाइट स्किन व्हाइट हेयर हेजिबो सेटा को albinism कहते. ठीक अछि. ओके, next in ball point pens the dyes used are. Okay, good question. Ball point pens the dyes used are oil based. See, in ball point pen the ball point pen जो अच्छी काली तार constituent कौन डाय रहिबो गोटे सॉल्वेंट रहिबो आ गोटे फैटी एसिड रहिबो. फैटी एसिड काहे की रहिबो? फैटी एसिड इज viscous and that help in drying faster. शीघ्र सुखी जाए बॉल पॉइंट पेन. दैट इज द एडवांटेज ऑफ बॉल पॉइंट पेन. ठीक अच्छे. तो ये सॉल्वेंट हिसाब से यूज करा जाए बेंजाइल अल्कोहल को. ठीक अच्छे, सॉल्वेंट हिसाब से यूज करा जाए बेंजाइल. जस्ट ए मिनट. सॉल्वेंट हिसाब से यूज करा जाए बेंजाइल अल्कोहल. Okay, benzyl alcohol. But the ballpoint pen the ink is fatty acid based, means oil based. But in roller ball pen it is water based liquid. Okay, you have to remember this, that in ballpoint pen it is oil based. Okay, okay. Okay, which of the following colors is least deviated by glass prism? Okay, you remember you have to remember this because it is a commonly asked question. See this image. See, गोटे white light जदि गला prism दे pass कला splitting हबो. Okay, जदि splitting हला light कोटा least deviate होची? Red is least deviated. Okay, red is least deviated. Maximum deviated is violet. Vibgyor VIBGY over V is violet. Maximum deviated red, least deviated. Least deviated red होतिबारु that is used in signaling. Signaling रे यूज करा जाए. ठीक अछि. ओके, रेलवे ट्रैक रे रेड लाइट यूज करा जाए. ठीक अछि, that is used in signaling. Okay, so the answer will be B, red. Next question. Ficus bengalensis is the scientific name of. Okay, option A brinjal, banana, people, banyan. Brinjal scientific name is solanum. Banana scientific name is Musa paradisiaca. Okay, Musa paradisiaca. Brinjal is solanum. People is Ficus religiosa. I mean people tree को religion रे केमती मन रखो. The people tree is a part of our religion. Okay, so it is called as Ficus religiosa.
and banyan tree is Ficus bengalensis. Okay, remember this. Okay, you have to remember anyway because questions are asked. Okay, so next question, Spirogyra is a kind of, okay, the answer will be Ficus bengalensis is banyan. Spirogyra is a kind of, Spirogyra is a kind of algae. Okay, Spirogyra hochi gote algae. See, एटा होची Spirogyra. Spirogyra तना स्पाइरो कहीं की हिची ना तुम मैं जानी थी वो सेल रो गोटे पार्ट होची क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल रो गोटे पार्ट होची क्लोरोप्लास्ट. Chloroplast is one part of the organelle of the plant cell. Okay, that is spiral in nature in Spirogyra. जेहेतु Spirogyra रो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट अच्छी सेति पई तार ना होची Spirogyra. Okay, due to spiral chloroplast it is called as Spirogyra, and Spirogyra hochi gote algae. Okay, answer will be A. Okay, next, which of the following substances is not synthetic? Okay, fibroin, Lexan, neoprene, Teflon. Very very important question. आमे सबु ऑप्शन रो important points discuss करिया. Option D first. What is Teflon? Teflon समस्ते ना सुनिथिबो. Teflon रो chemical name होची PTFE, that is polytetrafluoroethylene. Polytetrafluoroethylene. Okay, okay, तार यूज कोन? वाटरप्रूफ. टेफ्लॉन इज वाटरप्रूफ, सेति पई नॉन स्टिक सरफेस रे यूज करा, नॉन स्टिक पैन रे यूज करा, नॉन स्टिक पैन रोसे रे जेटा यूज होची, दैट इज कवर्ड बाय दैट इज मेड ऑफ टेफ्लॉन. देन आल्सो बाइक रे जो माने सर्विसिंग करे पे नोथबो देख शोरूम रे कहंती कि टेफ्लॉन कोटिंग दवा पई, ठीक है, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ टेफ्लॉन. ओके, देन ऑप्शन सी नियोप्रिन. नियोप्रिन इज सिंथेटिक रबर. हमर सिंथेटिक रबर यूज करछु, दैट इज नियोप्रिन. व्हाट इज लेक्सान? Lexan is the transparent plastic. जो हमारे प्लास्टिक दैट इज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ Lexan. यूज करा जाए कोथरे? यूज्ड इन बुलेट प्रूफ स्क्रीन ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ. Lexan रो स्ट्रेंथ बहुत हाई, सेति में एटा को बुलेट प्रूफ स्क्रीन ने यूज करा जाए. ठीक अछि, हमर ऑप्शन रो आंसर होची फाइब्रोइन. फाइब्रोइन इज द प्रोटीन and it is the chief component of silk. It is the chief component of silk. Okay, so that is the natural thing, it is not synthetic, whereas Lexan, neoprene and Teflon all are synthetic. Okay, okay, next, change in base sequence within a gene is called as mutation, cloning, fusion, breeding. Okay, गोटे जीन रे गोटे बेस सीक्वेंस चेंज टा कोन कहा जाय? सी, आंसर विल बी म्यूटेशन. म्यूटेशन विल बी द आंसर. ओके, म्यूटेशन डेफिनेशन कोन? म्यूटेशन डेफिनेशन ही होची सेटा कि चेंज इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. गोटे ऑर्गेनिज्म रो डीएनए सीक्वेंस चेंज टा को कहा जाय म्यूटेशन. व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग इज जेनेटिक कॉपीज ऑफ लिविंग बीइंग. गोटे लिविंग बीइंग रो जे जेनेटिक कॉपी तयारी करते, दैट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग. ओके, so here mutation is the answer. Okay, fusion you know, breeding that is a common term, breeding. Then hypsometer, last question. Hypsometer is used to measure pressure of gas, boiling point of liquid, level of humidity, depth of ocean. Okay, see ame dekhiba hypsometer concept kon. Hypsometer is an instrument. Okay, hypsometer is an instrument used for measuring heights, which employs the principle that the boiling point of a liquid is lowered by diminishing the pressure. Okay, एतिक मन रख कि hypsometer is a instrument for measuring height measurement पे यूज करा जाए. Okay, अब सेटा प्रिंसिपल कौन यूज करे? Which principle the hypsometer use? It use the principle that boiling point of a liquid is lowered by diminishing the pressure. जदि हमें प्रेशर कमे दोचे ताहाले boiling point ता कमी जाउचे. ठीक अछि, and that barometric pressure varies with the height of the point of observation. Just you have to remember that hypsometer रे principle रे boiling point ता अछि, but hypsometer use होचे measuring height. ठीक अछि, okay. आ गोटे जिंस देखिबा, hypsometry is the science of measuring elevation and depth features on earth surface. earth surface रे elevation और depth measure करया पे hypsometer यूज करा जाए.
with respect to sea level, माने sea level रो with respect to sea, depth of sea level or height above sea level use करा जाए, ठीक अछि. And it uses the principle that the boiling point of a liquid is lowered by diminution of pressure. Pressure कमेले boiling point भी कम हो जाए, ठीक अछि. Okay, so answer will be depth of ocean would be the best answer here. Okay, confusion होथो कि boiling point भी ही पारे answer. Okay, but this is the most preferred answer. Let's wait for the OPSC answer. Whether OPSC gives B or D, we will see. But as far as the explanation is concerned, the hypsometer is used to measure height either below the sea level or above the sea level. Okay, so the depth of the answer here, the depth of ocean is the most preferable answer here. Okay, okay. So thank you for your patient listening. We have discussed the science and technology questions. Okay, so this discussion was brought to you by Synapse IS, Synapse Academy YouTube channel. You can search for more discussions of the previous year questions. Okay, so keep learning. Thank you very much. Thank you.